वही ऐसे नल चालू किया और ऐसा पी रहे जितना पीना है पी रहे हैं। एंड आई एम लाइक यार ये लोग पी रहे हैं, हम लोग इनको कुछ नहीं हो रहा है और हमको ये ना। हाँ, हम स्कूल में फंस गए यार, अभी हम लोग को पूरा जिंदगी इधर ही निकालनी है। ये बाहर देखो फ्री घूम रहे, कुछ नहीं है, वी आर बाइंडेड, हम यहाँ पे जेल में आ गए, ऐसा मैं सोच रहा था। माइक्रोस्कोप मध्ये शेवाळ माउंट करा. वेलकम टू दिस शो वगैरह वो सब जो आसिफ बोलता है वो मैं बोलने वाला हूँ आज. सो दोस्तों से चर्चा में आप सबका स्वागत है. आज हमारे साथ एक नहीं बल्कि दो लोग हैं जिनके सरनेम तो सेम है लेकिन नाम अलग है और ये लोग भी अलग है. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू द चिंकी मिकी ऑफ X96, that is Asif and Moazzam. Asif is in London presently and Moazzam is in Nashik. Not required to tell you that they are twins. You can see them. So my first question is to whom? Asif or Moazzam? Alphabetically, Asif. So Asif, I want to know that now the same question is going to go for both of you. Okay, turn by turn. So I want to know what is the best thing that you enjoyed being twins in the same school. I think one of the best things which comes naturally is अगर मेरा कोई homework miss हो गया और टीचर ने बताया था ये करना है, we could easily fill in the gaps. Basically, another pair of eyes, another pair of ears, watching and looking at what's been taught in the class. We were in the same division, so that's it. So when did you join the school? Did you join the school from KG or you came somewhere in between? No, we joined from the second standard. Our first class teacher was Rashna teacher. And before that, where were you? We both were in Central School in Muscat, Oman. Okay. So coming to your individual opinions, what was your favorite place in the school? So one of the places which I enjoy the most going to and just maybe taking a stroll from one end of the corridor to the other is the place where you've got all the schools ka pass out ka pictures with the graduation years and the most famous topic of discussion is यार इसके तो 50% है यार, मेरे तो 55 है, you know, that way. And Moazzam, what was your favorite place to visit occasionally or frequently? नहीं, सबसे जो चर्च के पीछे जो रास्ता जाता है वहाँ पे गेस्ट हाउस वगैरह है. गेस्ट हाउस के पीछे, एकदम पीछे नहीं, क्या वहाँ पे वो सब स्टॉक रूम है उनका, सब चेयर वगैरह कुर्सियाँ सब रखते हैं. तो वहाँ पे पीछे एक गेट है, तो दैट गोज ऑन टू दैट दी पीछे का जय भवानी रोड. आई थिंक आई यूज्ड टू काइंड ऑफ लाइक बीइंग देयर बिकॉज वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी ऐसे घास फूस उग जाती थी, तो वहाँ पे हम वो ड्रैगन फ्लाई या कुछ पकड़ने गए. एंड अनदर एरिया वाज यहाँ पे बस की एंट्री एग्जिट है, to go there and observe the traffic, observe the people out on the road. And I used to think कि यार कहाँ हम स्कूल में फंस गए यार, अभी हम लोग को पूरा जिंदगी इधर ही निकालनी है. ये बाहर देखो फ्री घूम रहे, कुछ नहीं है, everything is there. Those people are so far off, better than what we are binded. हम यहाँ पे जेल में आ गए, ऐसा मैं सोच रहा था. But now obviously things are very very different. Right. Moazzam, looking at life now is totally different, as you said. Childhood mein you feel something different about the same things. Now you feel different. So what was your dream? क्या बनना चाहते थे बचपन में? Honestly, I had no such kind of dream के in primary or something कि मुझे डॉक्टर बनना है, कि मुझे इंजीनियर बनना है या कुछ बनना है. I used to enjoy going to school. That was my kind of primary objective बोल सकते हैं कि हाँ स्कूल जाना है. School I used to look forward to go to school. And Asif, what were your thoughts about your future when you were a child? साला वो टाइम पे मेरे दिमाग में ऐसा कुछ चल ही नहीं रहा था. मेरे दिमाग में जो ये बोल रहा है ना कि यार जब स्कूल खत्म कब हो, मेरे को स्कूल का ये स्कूल वाज अपने टाइम में आई थिंक स्कूल वाज अ प्लेस वेयर चिल्ड्रन डिड नॉट वांट टू गो for reasons, I think because it was too rigid and it was too regimental.
और अभी के स्कूल से अगर कंपेयर करें तो द स्कूल्स आर प्लेसेस वेयर चिल्ड्रन वेयर द स्टाफ मेक्स the school staff makes the place a bit more fun loving and enjoyable for the children to visit. Apne time mein I think it was the other way around. This is again my personal opinion. I think it was very rigid, very regimental, and maybe it was a combination of the school and the parents who made us feel like that. But you know, that was just my, so मतलब the whole idea of कि मेरे को बड़ा होके पायलट बनना है, ये करना है, वो मतलब that was like secondary. मेरे को बस स्कूल नहीं जाना है, that was primary. नहीं, I agree with this because I think PTA मीटिंग्स में भी काफी पेरेंट्सों ने एक पॉइंट भी उठाया था कि स्कूल का टाइमिंग 3:30 पौने 4 तक होता है, and by that time the child comes home it is 4:30. if नासिक सिटी में रहते हो, यहाँ रहते हो, तो 4:45 तक अगर लड़का घर पे पहुंचता है तो it's a pretty long day. So that is one of the reasons, you know, कि school people, I mean some students you know might have hated to go to school because सुबह 8 बजे से निकले घर से, शाम को 4:30 पौने 5 बजे घर पे. So that's a very very long day. And if you see the schools in today's times, 2 बजे तो फ्री हो जाते हैं. I would agree to that because of the fact, as I said, you know, कि parents भी were very very strict. जैसे तू बोल रहा था ना परेश कि भाई अगर तू रिपोर्ट कार्ड लेने अगर पेरेंट्स आते हैं तो तेरे नंबर नहीं आए तो टीचर से तो मार पड़नी है, और पेरेंट्स बोलेंगे भाई टीचर को और मारो, हमारी तरफ से भी मारो. ये सब होता है यार कि पेरेंट्स एंड टीचर्स वर्क हैंड इन हैंड टू मेक दैट एक्सपीरियंस फॉर यू. Right. What was something that is very memorable that you'll always remember, which makes you feel happy about when you recollect it? Memorable तो अभी एक चीज है. I mean, I guess I was the only student up until the 10th standard जो गले में वाटर बॉटल लगा के घूमता था, and घर तक आओ तो गले में वाटर बॉटल. So that is something I still, you know, remember, and I still, you know, probably laugh at my own self. But yeah, that is how I lived my life. And वो time, you know, as Moazzam said, like, you know, we had come from Oman, right? So the whole idea, even at that point in time, कि भाई you know, pani is not filtered, pani is not boiled, so there'll be a lot of germs and bacteria that you might catch and you might fall ill. So the whole thought process of having your own bottle घर से भर के लाना, and that bottle you make it last all the way till 4 o'clock in the evening was tough कि भाई हमको इतना ही पानी पीना है पूरे दिन में, अगर पानी खत्म हो गया तो और पानी नहीं ला सकते घर से, और स्कूल का पानी पी नहीं सकते. पेरेंट्स ने ये करके इतना डरा दिया था कि स्कूल का पानी पी नहीं सकते because it's not boiled. And then we used to see all our friends drinking water from the school taps, and वही ऐसे नल चालू किया और ऐसा पी रहे जितना पीना है पी रहे. And I'm like, यार ये लोग पी रहे हैं, हम लोग, इनको कुछ नहीं हो रहा है, और हमको ये ना बोला है कि भाई घर का पानी पीना है, स्कूल का पानी नहीं पीना है. Asif, which subjects did you like? मेरा टाइम पे I think the subjects which I loved the most was obviously the subjects which I scored the most in. और उसके अंदर I think the only subject which I ever remember getting full marks was in computers. So the whole idea of actually going to even the computer lab, कि भाई वहाँ पे, or say for example if you're in your 9th standard, 10th standard, so your classes would be all the way to where the church is, and church की side से to walk all the way to the computer lab side, which is like on the other end of the other end of, I would say, the premises or the school campus, would be like a, you know, good stroll, और पूरा स्कूल का टूर हो जाता उतने में. हर एक क्लासरूम में झांकने का, क्या इधर क्या चल रहा है. Moazzam, what was your favorite subject at that time? My favorite subject was, I would say, English and computers. Computers, why? Because as he said, the same thing, I used to score good. मतलब अगर समझो 25 मार्क का पेपर है, 50 मार्क का भी वो टेस्ट है, तो मेरे को आराम से 45 तो आ ही जाते. मतलब 2-5 मार्क ही कम होते हैं, तो आई वाज प्रीटी हैप्पी, यार ये तो अच्छा हो रहा है. एंड कंप्यूटर्स वाज अ सब्जेक्ट फॉर मी के इफ आई हैव नॉट स्कोर्ड इन अनदर सब्जेक्ट, तो my marks of the computer subject could, you know, make up for the loss. My favorite teachers were Katale sir for maths. ऐसा बोल सकते हो. Katale sir was very
good. I mean, we started out, I think when we were in 6th, that time Katale sir came to St. Xavier's. Or if you remember, I don't know, 6th class, 6th standard, I was in 6th B. So 6th B was the only probably the division or the class in the entire school where the teachers kept on changing. हर 15 दिन महीने में टीचर्स चेंज होते थे, if you remember. So finally कटाले सर आके रुक गए, और he was our class teacher at 6th B till probably the end of our term. So कटाले sir was one of the favorites. And then अपने कंप्यूटर में वैभवा टीचर थी, if you remember, the short Yes, one. yes. I used to look forward के अभी वो आएगी हर एक कंप्यूटर पे, मेरे कंप्यूटर पे आएगी, और वो फ्लॉपी डिस्क डालेंगी और वो अपना वो हेलीकॉप्टर का गेम चालू होएगा. तो फ्लॉपी हुआ करती थी. हाँ, फ्लॉपी. फ्लॉपी का तो सीन मेरे को अभी तक याद है यार. वो फ्लॉपी डिस्क मतलब ऐसा होता था कि भाई एवरी फ्लॉपी यू गेट इन, एवरी टाइम यू गेट इन टू द लैब, इट हैज टू बी वायरस स्कैन फर्स्ट. और वायरस स्कैनिंग एक ही मशीन पे होता था, वो एकदम फर्स्ट मशीन जो कॉर्नर पे रखा होता है. और एंड एक टीचर वुड बी ऑलवेज बी देयर. स्टूडेंट फ्लॉपी डिस्क लाएंगे, फ्लॉपी डिस्क डालेंगे कंप्यूटर में, वायरस स्कैन होगा, वायरस स्कैन हो गया, ऑल क्लीन हो गया, एंड देन you go and use that floppy to boot your machine up. Abhi, now I'm thinking about it because you've got so much knowledge of it कि भाई floppy disk अगर use नहीं करते पूरा हफ्ता, then you come back, it is still the same floppy disk. उसको मतलब घर बैठे बैठे तो बारिश में वायरस नहीं लगेगा फ्लॉपी को. I was never nominated for being a leader. My brother Asif, he was nominated for being a leader. Then वो इलेक्शन में खड़ा हुआ, तो मुझे वो चीज बहुत पसंद आई यार. उसका इलेक्शन है, फिर वो क्या है, 3-4 लोगों को लेके चलो स्कूल इन द मिडल ऑफ द पीरियड टाइम, क्लासेस में चालू है, उसके बावजूद भी हमको स्पेशल परमिशन है, अलाउड टू गो आउट टू स्टिक बैनर्स एंड स्टिकर्स ऑन द वॉल्स एंड ऑल. आई यूज्ड टू लव दैट. मैं बोला अपने को स्पेशल परमिशन है, अपन एकदम वी आर वेरी स्पेशल. आई यूज्ड टू लव दैट कि बाकी लोग पढ़ाई कर रहे हैं और अपन इधर टाइम पास घूम रहे, चिपका रहे कुछ भी. The other thing in school which I remember, which I used to really enjoy, was going into the biology lab. और biology lab के अंदर where you got all those test tubes and beakers and all kept in those glass cabinets. So I used to love that place because that was the only place which used to look so different from a regular classroom. High tabletops, and everybody had high stools to sit on. So exactly. So वो and I used to और वो माजी टीचर का जो आवाज है ना, जो वो इसको बालू को बोलती थी, बालू माइक्रोसॉफ्ट नहीं क्या बोलती थी ना, बालू माइक्रोस्कोप मध्ये शेवाळ माउंट करा. शेवाड़ जो वर्ड है ना, मेरे को समझ आ नहीं था ये शेवाड़ है क्या. तो हमारे टाइम पे हम लोग माइक्रोस्कोप में क्या देखते थे, माइक्रोस्कोप में ज्यादा से ज्यादा एक अमीबा देखते थे, और अमीबा भी वो तो मेरे लिए शेवाड़ वाज अमीबा. फिर बाद में जाके मैं ये किया कि भाई शेवाड़ चीज क्या है. शेवाड़ वाज जस्ट अनदर नेम फॉर एन एल्गे, लाइक अ मराठी नेम फॉर एन एल्गे. तो मतलब अरे द वेरी फर्स्ट things probably in science, probably I think in 3rd, 4th, 5th standard, I don't remember when, we started to draw was a amoeba. एक सर्कल या कुछ बना दो क्लाउड जैसा, उसके ऊपर टिक 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 ड्रॉ कर दो, वो अमीबा हो गया. अरे the best part was जब अमीबा का ड्राइंग अगर कोई क्वेश्चन पेपर में एज अ क्वेश्चन आ गया, तो पूरा एग्जाम क्लास इज डूइंग कट ऑन द बेंच. मतलब सबको पता है कि भाई अमीबा का ड्राइंग चल रहा है. अमीबा तक पता चल जाएगा, अमीबा को भी पता चलेगा अपनी ड्राइंग हो रही है. Exactly. That was the best part I think about the biology thing. यार, and उसके लिए वो माजी टीचर का जो टोन है ना, in the way she used to call out to Balu to actually mount those microscopic organisms under the microscope, because students were only allowed to look through the microscope, not to actually mount it on those plates. So Asif, who were your favorite teachers? I think मेरे लिए my first teacher is always very special, which was Rachna teacher, Rachna Kolhapur wala, because we joined the school in between, I think it was standard 2. So उसके अंदर the idea was कि okay, there are maybe 50 people in the class who have started second standard from the very beginning, and me and brothers join in. So she actually went out of the way to check on us कि भाई are we coping well.
are we actually, having that level of integration with the rest of the class, that the class has been there from the very beginning. So she actually went, I would say at that time, and at that point in time, she went out of the way to make us well integrated into the class. So I think And feel comfortable at school. and the integration level. So I think that is a very special quality, which I think जो अभी के standards के हिसाब से is considered sort of standard, but वो time पे not every teacher actually had that quality. तो कौन से टीचर थे जिनका डर लगता था? Every teacher used to be like, I used to be scared of every teacher that I used to score less in those subjects. मेरे को इससे डर लगता था. You see, Sheila teacher नहीं, sorry, Shaila teacher used to teach, I don't know what subject, 6th standard में. Science, okay, 6th standard में. And what happened, I used to get very scared of her because she was the only teacher who used to check कि no student is wearing a wristwatch. Wristwatch allowed नहीं थे उनके period में या अपने school में. कुछ तो भी था ऐसा. तो I used to carry the wristwatch in my bag. वो period में वो निकाल लेता था मैं, and बाद में मैं वापस पहन लेता था. Okay, so I remember something everybody keeps speaking about. Is वो Bisca का क्या था? Bisca. Oh yes, that was I don't know where. I think that was during when we were in class 4 or class 5. I think. Fifth standard था I think. वो डैडी ने एक न्यू वेंचर स्टार्ट किया था regarding it was about these hot pot या pot noodles बोलेंगे. So you just mix warm water, hot water, and and stir it, and it is ready to eat noodles. So that was the only thing. So, and then he put up stalls to introduce the product. So we sort of, I think, got to we got famous, I think, in that, saying, okay, these are the Bisca Boys. Bisca Boys, right? Bisca Boys, correct, exactly. Yeah. I used to during the long recess, I used to have my lunch very very quickly. कि मुझे जाके अभी band practice करनी है, because 45 minutes में क्या खाना भी खाना है, फिर ऊपर भाग के जाना है, बैंड प्रैक्टिस करना है. एंड फिर वो क्या होता है वहाँ पे जाके, व्हाट आई यूज्ड टू फाइंड इज के देयर आर 2 ड्रम्स, उसमें से एक ड्रम इज आउट ऑफ ऑर्डर या टूट गया या फट गया है, और एक ही ड्रम पे प्रैक्टिस करना पड़ता है, दूसरा खत्म करे फिर मुझे चांस मिलेगा. So what else you used to play? You also played the trumpet or something? I played the bugle, I played the flute, I played the drums, the bass drums, and the bagpipes. Wow. Yeah. So this was some standard universal tune that you used to play. Yes. So 100 pipes is a standard tune which is used for march pasts basically around the world, and we use the same tune for our generic march past. Absolutely. So I get a very good feeling that a handful of students, like hardly maybe 5, 6, 7 students are playing something which the entire march past or the school is probably functioning on. ऐसा वो time पे मेरे को सोचता था कि मतलब like as band boys we have a very very important role. हम नहीं होते तो ये march past ही नहीं होता आज. Right. That way. Right. One other thing I remember is when we used to come to school when we 8:30 8:15 बजे के आसपास, and the time we used to leave the school at 3:15 3:30. स्कूल के बाहर एक या दो वो आर्मी की बस या आर्मी की ट्रक खड़ी होती है. If you remember, हाँ, शक्तिमान trucks. So I used to fancy those trucks. I used to think कि यार मुझे ये गाड़ी में, ये ट्रक में, ये बस में मुझे एक बार बैठना है, एक बार जाना है, which never really happened in my life. So these were our Bisca Boys, our band boys from X96. Keep watching Doston Se Charcha every Saturday, which gets released on our Facebook group. Thank you so much, Asif and Moazzam, for being on the show, and thank you, Asif, for all the editing and the hard work.